Hey guys, welcome back to the channel, and if you are new here, please subscribe to my channel. By looking at the thumbnail, you must have got about what is the today's topic of discussion is. Now, pulp is very important topic with respect to the endodontics and conservative dentistry as well as in the dental histology topic. Dental histology is subject of the first year. Okay, now first of all, we will start with the general anatomy of the tooth. Okay, so this is a diagram of the tooth, and in which I'll try to show you those various structure or the component of the individual tooth that it's having. Okay, so first outer layer is the enamel, as you all know. Then after the when we come from outer side to the inner side, this enamel. Then after secondary is yellow portion is dentine. Then after this inner side of the dentine, that is pulp. Okay. Then after, you all know that the gingiva, the outer portion. So this is gingiva or gum. So this is also the important topic with respect to the dental histology. Okay, because it contains in the oral mucous membrane topic. So we will not go detail into that, but it also have its own weightage with exam point of view. Okay. So after that, so this is a pulp. Then after cementum. Cementum starts from this area to this around the root portion. Then after the blood vessels are present in the pulp. Okay, we will cover it in the upcoming slides. So blood vessels and nerves. Okay, yellow color ka nerve and this red color and blue colors are the blood vessel. Surrounding the tooth structure, there is PDL, that is called as a periodontal ligament. Okay, so this whole portion is a crown and this is the root. Okay, so what is anatomical crown, what is clinical crown, we will not go into the detail of that, but this is all about the basic structure of the tooth. Okay, so let's get deep down into the pulp. Okay, so pulp. Now, what is pulp? So basically, pulp word came from the Latin language, that is pulpa. Pulpa means this is pulpa. Pulpa means animal or the plant tissue, मतलब living tissue, animal or plant का. Okay. So अगर उसको define करना हुआ, what is pulp or pulp can be defined as the vascularized innervated connective tissue, mesodermal origin उसका, and enclosed by the dentine and communication to the PDL. डेंटिन से कवर्ड है विद कम्युनिकेशन टू द पीडियल. ओके, मतलब डेंटिन से एज वेल एज पीडियल से. ओके, देन आफ्टर उसके पार्ट या फिर टाइप अगर बोले पल्प के, सो इट इज हैविंग द टू पार्ट्स, दैट इज कोरोनल एंड द रेडिकुलर वन. नाउ व्हाट इज अ कोरोनल एंड व्हाट इज अ रेडिकुलर? तो बेसिकली एज वी हैव सीन अर्लियर, दैट इज क्राउन पोर्शन एंड द रूट पोर्शन. सो बेसिकली कोरोनल मीन्स क्राउन and radicular means root portion. Okay, so the pulp which is in the crown portion, that is called as a coronal pulp, and the portion of the pulp which is in the root portion, that is called as a radicular pulp. Okay, so उसके बारे में थोड़ा और डिटेल में. So this is a coronal pulp. Okay, now in coronal pulp you can see it's having the six surfaces. Now six surfaces कौन कौन से है? तो रूफ या फिर ऑक्लूजल सरफेस जो कि सभी को होता है. ओके, देन आफ्टर मीजियल और या फिर डिस्टल, देन आफ्टर बक्कल या फिर लिंगुअल या फिर फ्लोर. अगर इसको काउंट किए तो 1 2 3 4 5 एंड 6. सो इट्स हैविंग द सिक्स surfaces. Okay, six surfaces को. देन आफ्टर द पल्प हॉर्न. नाउ यू ऑल नो दैट कि जो पल्प प्राइमरी टीथ में है एंड परमानेंट टीथ में है उसके अंदर फर्क होता है. इट इज डिफरेंट. एंड जो न्यूली फॉर्म पल्प होता है वो एक एडल्ट से वेल मैच्योर टूथ से या फिर रूट स्ट्रक्चर में जो होता है उससे वेरी करता है. ओके, सो जो फर्स्ट पल्प डेवलप होता है वाइल इन टूथ, सो उसके अंदर क्या होता है, उसकी जो प्रोट्रूजन दैट इज इनटू ईच कर्व ऑफ द क्राउन. क्राउन का जो कर्व है, सपोज सो अगर दिस इज द टूथ क्राउन स्ट्रक्चर, सो उसका पल्प भी ऐसे इसके अंदर ये करेगा. ओके, इमेजिनेट करता है, ऐसा हमें दिखता है. ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोट्रूजन इनटू द कस्प. ओके, देन आफ्टर द सर्वाइकल कंस्ट्रिक्शन, एज यू ऑल नो दैट जैसे कि क्राउन पोर्शन एंड द रूट पोर्शन जहां पर मीट होते हैं वहां पर एक नेक फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ सर्वाइकल एरिया. सो इन दैट सर्वाइकल एरिया कंस्ट्रक्शन इज देयर. नॉर्मल टूथ एनाटॉमी भी होता है एंड वैसा ही सेम पल्प के अंदर भी होता है. ओके,
Thereafter, because the continuous deposition of the dentin pulp becomes smaller with the age, as I have mentioned earlier, pulp horn रहते हैं earlier में, thereafter ये थोड़ा flatten हो जाता है, okay, in adult one, okay. उसके बाद after the coronal pulp, second part is radicular pulp. Now, radicular pulp, as you all know that radicular pulp is a portion of the pulp in the root portion of the teeth, teeth और अगर कहे singular तो tooth, okay. Now, cervical region to the apex area, okay. उसका जो एक्सटेंड रहता है रूट का कहाँ से सर्वाइकल रीजन से लेके अपेक्स तक रूट अपेक्स तक रहता है ओके नाउ इन एंटीरियर टूथ यू ऑल नो दैट सिंगल रूट रहता है एंड पोस्टीरियर टीथ में मल्टी रूटेड टूथ रहते हैं प्रीमोलर्स एंड मोलर्स ओके हो सकता है कि आपको लगता है कि रेडिकुलर पल्प इज ऑलवेज स्ट्रेट बट इट इज नॉट ट्रू इट इज नॉट ऑलवेज स्ट्रेट टेढ़ा भी या फिर टर्न्ड या फिर थोड़ा कर्व भी हो सकता है देन आफ्टर बिकॉज मोर डेंटिन इज फॉर्म एज अ रूट गेट मैच्योर रेडिकुलर पल्प इज नैरोअर डेंटिन फॉर्म होने की वजह से जैसा ऊपर होता था क्राउन कोरोनल रूट इन कोरोनल पल्प में वैसा रूट के लिए भी होल्ड ट्रू ओके नैरोअर हो जाता है विथ एज ओके देन आफ्टर एज से ज्यादा ग्रोथ जैसे जैसे ग्रोथ होगा डेंटिन की जैसे जैसे ग्रो होगी जैसे जैसे डेंटिन डिपॉजिट करेगा ऊपर वैसे वैसे पल्प की साइज छोटी हो जाती है बिकॉज इट्स अ लिविंग टिश्यू छोटा छोटा हो जाता है ओके देन आफ्टर अपाइकल pulp canal becomes smaller also because of apical cementum deposition. अभी सिर्फ ओनली डेंटिन तो नहीं डेवलप होगा हाँ सीमेंटम भी होता है उसकी वजह से अपाइकल कैनाल जो रहता है पल्प कैनाल वो नैरो हो जाता है ओके देन आफ्टर टोटल वॉल्यूम ऑफ परमानेंट टीथ पल्प ओके परमानेंट टीथ में पल्प का टोटल वॉल्यूम कितना है 0.38 सीसी एंड द मीन वॉल्यूम ऑफ द सिंगल एडल्ट ह्यूमन पल्प दैट इज 0.02 सीसी ओके सो ये एमसीक्यू के लिए पूछा जाता है this is an important question this for the MCQ point of view is that okay then after अपाइकल फोरामेन की बात करें तो अपाइकल फोरामेन की साइज वैरी करती है ऑफ कोर्स करेगी then it means in maxillary teeth in adult 0.4 mm diameter रहता है उसका and in mandibular teeth in adult it is quite smaller as compared to the maxillary teeth that is 0.3 mm diameter millimeter diameter okay now ऐसा भी हो सकता है क्या कि रीलोकेशन ऑफ द ओरिजिनल फोरामन एक फोरामन है और उसका रीलोकेशन एक जगह से दूसरी जगह पे हाँ ये पॉसिबल है कैसे टिश्यू एंटरिंग पल्प टिश्यू वाया अपाइकल फोरामन पल्प यानी तो जो जो टिश्यू एंटर करेंगे अपाइकल फोरामन में वो क्या करेंगे प्रेशर कॉज करेंगे ऑन द वॉल्स ओके सो जिस साइड से प्रेशर कॉज करेंगे जिस साइड से प्रेशर अप्लाई करेंगे उस साइड से रिजॉर्प्शन होगा उसका एंड एग्जैक्टली ऑन द अपोजिट साइड उसका डिपोजिशन होगा ओके सो दैट रिजल्टिंग इन रीलोकेशन ऑफ द original foramen. Okay, sometimes it also happens that apical opening found on the lateral side of the apex. Okay, apical opening found on lateral side of the apex, although itself root is not curved. हो सकता है कि root is straight, but still उसकी जो apical opening है वो थोड़ी lateral side में है. It can be possible. Okay, then after frequently क्या होता है कि टू और मोर फोरामन सेपरेटेड बाय द पोर्शन ऑफ द डेंटिन एंड द सीमेंटम और बाय द सीमेंटम ओनली मतलब दो अगर अपाइकल फोरामन है एज यू नो दैट अपाइकल फोरामन होते हैं एंड देन आफ्टर द एक्सेसरी कैनाल्स भी होते हैं सो वो जो सेपरेशन रहता है वो डेंटिन एंड सीमेंटम से या फिर ओनली सीमेंटम से भी पॉसिबल है ओके देन आफ्टर नेक्स्ट इज एक्सेसरी कैनाल्स नाउ अपाइकल कैनाल एंड एक्सेसरी कैनाल्स ओके एक्सेसरी कैनाल्स लीडिंग फ्रॉम रेडिकुलर पल्प लैटरली अगर पल्प है सपोज ये टोटल पल्प का पोर्शन है तो लैटरली यहां से रेडिकुलर पल्प ये हुआ तो यहां से लैटरली ओके थ्रू रूट डेंटिन टू पीरियोडोंटल टिश्यू नाउ सी वो कहीं भी दिख सकते हैं रूट पोर्शन के ऊपर एनीवेयर ओके एनीवेयर ऑन द रूट पोर्शन बट मोस्टली इट्स कॉमन इन अपाइकल थर्ड ऑफ द रूट okay mostly it's common in the apical third of the root now what is the clinical significance of accessory canals is clinical significance of accessory canal is the spread of infection now spread of infection कहाँ से हो सकता है it might cause the infection to the periodontal ligament from the pulp or the vice versa मतलब फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड भी हो सकता है और वाइस वर्सा आउटसाइड से इनसाइड भी हो सकता है अगर एंडोडोंटिक अगर ओरिजिन का रहा तो एंडोडोंटिक ओरिजिन का अगर कोई डिसीज है तो वो वाया टूथ मतलब पल्प से लेके बाहर तक जाएगा पेरियोडोंटल लिगामेंट तक
और अगर पेरियो लीजन है, ओके, पेरियोडोंटल लीजन है, तो पेरियोडोंटल लीजन बाहर से अंदर आएगा उस कैनल के थ्रू। सो ये उसका इंपॉर्टेंस है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है इन्फेक्शन स्प्रेड करने में। ओके, देन आफ्टर द मैकेनिज्म बाय विच दे फॉर्म। अभी मैकेनिज्म कौन सा है जिसकी वजह से वो फॉर्म होते हैं, वो तो अभी तक पता नहीं, इट्स स्टिल अननोन, बट मोस्ट लाइकली ऐसा हो सकता है कि इट ऑकर्स इन एरियाज वेयर देयर इज प्रीमेच्योर लॉस ऑफ रूट शीथ। अब रूट शीथ प्रीमेच्योर लॉस होने के कारण ऐसा होता है, एक्सेसरी कैनल्स फॉर्म होते हैं, ऐसा कहते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि जो रूट शीथ होते हैं वो इंड्यूस करते हैं ओडोंटोब्लास्ट फॉर्मेशन, ओडोंटोब्लास्ट, ओके, ओडोंटोब्लास्ट सेल्स। और ओडोंटोब्लास्ट सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द डेंटिन, जिसकी वजह से डेंटिन फॉर्म नहीं होता एंड उसकी वजह से वो कैनल्स फॉर्म होते हैं। ओके, नाउ और एक चांस है कि एक्सेसरी कैनल्स में आल्सो फॉर्म। ओके, क्यों हो सकता है? बिकॉज वेयर द डेवलपिंग रूट इनकाउंटर्स द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के लिए वो बैरियर क्रिएट करेगा डेवलपिंग रूट। ओके, इफ वेसल, अब ये जो वेसल है, अगर इफ दैट वेसल इज लोकेटेड इन द एरिया वेयर डेंटिन इज फॉर्मिंग, अगर वो वेसल उसी एरिया में प्रेजेंट हुई जहां पर डेंटिन ऑलरेडी फॉर्म हो रहा है, देन हार्ड टिश्यू में फॉर्म अराउंड इट, उसके अराउंड में, ब्लड वेसल के अराउंड में हार्ड टिश्यू फॉर्म होगा एंड वो क्या करेगा, लैटरल कैनाल फॉर्म करेगा फ्रॉम रेडिकुलर पल्प। सो आज का जो लेक्चर था दैट इज ऑल अबाउट द जनरल एनाटॉमी, जनरल फीचर, कोरोनल पल्प, रेडिकुलर पल्प, एक्सेसरी कैनल्स एंड अपिकल फोरामन। सो दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द टॉपिक ऑफ पल्प। इसके आगे जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है, दैट इज द एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस दैट विल बी कवर इन द अपकमिंग लेक्चर्स। सो जिसके अंदर है फंक्शंस है, डिफरेंस बिटवीन, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ पल्प हुए। देन आफ्टर सेकंड की अगर बात करें तो डिफरेंस हुआ प्राइमरी एंड सेकेंडरी का, सॉरी प्राइमरी एंड परमानेंट का। देन आफ्टर एज चेंजेस इन पल्प, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो ऐसे सब मिला के देन आफ्टर द स्ट्रक्चरल फीचर, जिसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट है, फाइबर्स है, देन आफ्टर ओडोंटोब्लास्ट है, डिफेंस सेल्स, पल्पल स्टेम सेल्स, ब्लड वेसल, लिम्फ vessels. So these all are the topic that we are going to cover in the upcoming lectures, but stay tuned for that. Now that's all for today. If you get the concept, so make sure you like the video. If you have any kind of a doubt, or you want to mention some point, or you want me to create new videos on some different topics, so let me know in the comment section below. And don't forget to subscribe my channel and hit that bell icon so that you could get the latest update of my video सबसे पहले. So till that फिर मिलते हैं. Till that keep studying.